Hi, welcome back to the channel. I'm your host, Dr. Seema Jain, and this video is going to be a little special one. In this video, I will be talking about 4 IPOs which have been recently launched. इस वीडियो में मैं बात करूंगी 4 ऐसे IPOs जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं और जिनका प्राइस मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। अब मैं ये ना तो आपको बाय की रिकमेंडेशन दे रही हूँ ना मैं सेल की रिकमेंडेशन दे रही हूँ, मैं केवल आपको एक प्राइस दिखा रही हूँ। ठीक है, आप देखिए, आपको अच्छा लगता है, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग इनके बारे में डिस्कस करूंगी। शायद ये स्टॉक्स आपने कभी सुने भी ना हो और सुने हो तो ध्यान नहीं दिया हो, बट क्योंकि मैं इनका प्राइस देख रही हूँ और मुझे प्राइस बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग इट विद यू. So to me, the price looks pretty much attractive. Quickly, I may look into there's some fundamentals also, but I'm not planning to look into the fundamentals right now. Like that part, I leave it to you. All of you, those who are watching this video, should go through the fundamentals of all the 5 stocks and write in the comment box which one do you think is the best. Okay. I'm going to discuss the price action and you will talk about which stock looks good to you for investing or momentum trading purposes. So let me start, and I'm going to make a very small video for you. It's not going to be a very long one. So the first stock that I have on my radar is Fusion Microfinance. This is how the stock is. If you have a look at the daily chart, the price has been continuously shifting in the upward direction. Price has been continuously moving in the upward direction and it's in a channel. Now, what I understand from the price is definitely looking good. Buying can be initiated above 403 and a stop loss in case it comes down till about 364, we can accumulate more. So what I'm doing, I'm just marking the first candle. पहली candle जो IPO जिस दिन launch हुआ था, उस दिन की मैं पहली candle को mark कर रही हूँ and वो मेरा एक बहुत important yardstick हो जाएगा कि अगर प्राइस ऊपर जाके यहाँ पे रिट्रेस करता है till about 364, I may think of buying some more quantity. As of now, according to me, 404, 405 is a good buying opportunity. So this is my first stock. पहले stock का नाम है Fusion Microfinance. I'm not gonna look into great detail, but quick recap, right? Quick recap हम देखते हैं कुछ ऐसी चीज की जो बहुत ही नेगेटिव हो उसको हम इग्नोर करेंगे। तो कुछ 4000 करोड़ की कंपनी है, ROC ROE is not very good, but ROC is about 8.15%. There are some negatives in the company, and then sales have gone up in this year itself. And if I talk about the profits before the tax, that has also grown quarter-on-quarter basis. And if I look into the operating profit margins, year-on-year basis also they have grown. And if I look at the borrowings are pretty much higher than the reserves, right? So that's going to be a concern to me because debt to equity ratio is pretty high and they have been just having the negative cash from operating activities. Okay, so loan advances. So this is basically because they have given the loan advances. That is why you can say that the whatever cash generated basically is negative. But profits from operations, if you see 26, 76, 165, 259 and 317, it's been growing because their loan book is also growing. And if I look into the FIDI holding, it's pretty strong holding that exists. So that was my first stock. And have all these 5-star stocks on your radar. I'm sure someone or the other will give you good move. The next is 𝐾𝐬𝐻 Technology. 𝐾𝐬𝐻 Technology. The IPO was launched about in November 22nd. The price is within the range of the first candle. So that's a very, very important thing for us to note. There may be a breakdown, there may be a breakup, right? In case it goes in the upper direction, stock may give you further
up more. What I want from you people is to find out what exactly these companies do. Okay, what these companies do and which one is looking best to you, right? You have to find out which one is looking best to you. This company is also about 4,200 crore. Stock P is about 103. ROC and ROEs are pretty good. Okay, and then they have stock is trading 16.5 book value. Sales, there is not much result on quarter basis, but yearly, if I have a look into it, there has been a growth in the operating profits year on year basis. Okay, if I look into the borrowings, so borrowings and the reserves are almost on the same tune, and there is cash from the operating activity. And if I look into the debtor days, it's about 103, and shareholder pattern is not available, so that's fine. So this is another stock which I do have on my radar. Now, again, if you have a look at it, price has slowly shifted in the upward direction, and there is a slight drop. And if it takes a support and takes a bounce, I'm expecting good move up. तो पहले प्राइस धीरे धीरे ऊपर गया, फिर थोड़ा सा रिवर्सल है, और अब अगर ब्रेकआउट आएगा तो यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड मूव अप इन केन्स. आप लोगों से मेरी विनती है कि प्लीज इस कंपनी के बारे में सर्च करिए. अगर आपको नहीं पता है कि कहाँ सर्च करना है तो screener.in पे ही जाइए और यहाँ जाके देखिए कि कंपनी क्या करती है. आपको यू विल नो एवरी सिंगल डिटेल अबाउट द कंपनीज. आपको पता लग जाएगा कि ये कंपनी किस में काम करती है. प्लीज डू दिस होमवर्क. अगर आप ये आदत डालेंगे तो आपको आदत पड़ेगी, नहीं तो आपको केवल इस चैनल से उस चैनल में जाने में ही इंटरेस्ट रहेगा. आप केवल यही सुनते रहोगे दूसरों की ओपिनियन. आपको अपनी ओपिनियन बनानी कभी नहीं आएगी. तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये कंपनी क्या करती है और इसके फंडामेंटल्स आपको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं अच्छे लग रहे हैं. Next is email, Electronics Mart India Limited, right? This is a company which is basically a south-based retailers. I will just mark the first candle once again. The IPO was launched on 17th of October, just before Diwali. And if you notice, the price went up here, then came down, took a support from this level, again went up, then came down, broke the support for a while, and again it stood here and taking a good support. प्राइस ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, बट इसी जगह पे जो इसका फर्स्ट कैंडल है इसी जगह पे सपोर्ट ले रहा है. और अब अगर प्राइस 91 को क्रॉस करता है और वहां पे रुकता है एक दो दिन, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ टारगेट ऑफ 100. एक 100 का टारगेट आपको जरूर आता हुआ मिलेगा. ठीक है, ये मेरा थर्ड स्टॉक है. पहला स्टॉक कौन सा था? फ्यूजन. दूसरा था केन्स. तीसरा है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया लिमिटेड. प्लीज गो टू द screener.in एंड चेक करिए कि ये कंपनी क्या करती है. एंड आई वांट एवरीबॉडीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. कंपनी कुछ 3,500 करोड़ की है. पीई इज प्रीटी अट्रैक्टिव, 33 पे है. आरओसीई अच्छा है, आरओई अच्छा है, और प्रोज कुछ खास नहीं है. और इसके कॉम्पिटिटर्स आप देख सकते हो, एवेन्यू सुपरमार्ट, ट्रेंट, वेदांता, मेट्रो ब्रांड, मेड प्लस, वी मार्ट, अरविंद, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट. ओके, जहां तक बात करते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस व्हाट इज हैपनिंग टू द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, तो थोड़ा इंक्रीज होते हैं और फिर थोड़ा स्टैग्नेंट है यहाँ पे. और जहां तक हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर फ्रॉम 2019 दे हैव ग्रोन 100 to 28, 204 to 92. देन रिजर्व्स अगर हम देखें तो कम है और बोरोइंग्स ज्यादा है, राइट? सो दैट इज गोइंग टू बी अ कंसर्न. और अगर हम बात करें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे आर हैविंग गुड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बट कहाँ पे इनका पैसा जा रहा है? दे आर बाइंग कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. सो in investment they are spending some amount of money and fixed assets purchase कर रहे हैं, उनमें इनका पैसा जा रहा है. और जहां तक बात करते हैं कि डेटर डेज बहुत कम है, 9 डेज है, और थोड़ा सा होल्डिंग FIIs का भी है और थोड़ा सा होल्डिंग DIS का भी है, और प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफी रॉक सॉलिड है, अबाउट 78%. तो ये मेरा चौथा स्टॉक था, नहीं तीसरा स्टॉक था ईमेल. चौथा स्टॉक है जो मेदांता.
और ग्लोबल हेल्थ, मेदांता और ग्लोबल हेल्थ. दिस इज हाउ द स्टॉक लुक्स लाइक. आप नोटिस करिए कि ये इसकी फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है. विद इन फ्यू डेज इट वाज ब्रोकन. नाउ द प्राइस इज हॉरिजॉन्टल. What I would like that the price comes here, that the price comes to 420, takes a support and then goes up. If it takes support here for some time, I will add some quantity. If it breaks it and come to the level of 400, I will add some more quantity. And then above 484, I will add higher quantity. So my first level of, let me just show you. So first level of buying is going to come. Let me just explain you once again. This is the level that stock has. So first level is when it falls to this particular level, which is about 420. In case it further falls down, it comes down to 400, I will add some more quantity. And if it bounces back, then I will again add quantity here at 420, and above 484, I will add maximum quantity, because then it's going to be in free space. अब हम जल्दी से मेदांता के फंडामेंटल्स की भी बात कर लेते हैं, which is global healthcare. कुछ 12,000 करोड़ की कंपनी है. स्टॉक पी इज अबाउट 61, ROC is about 15, and ROCE is about 13. जहां तक बात करें, प्रोज कुछ है नहीं, कॉन्स में भी थोड़े से हैं. स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 6.8 times the book value. Companies in profit but not paying dividends, and the low return on equity. So these are some cons. जहां तक सेल्स की बात है, sales have grown definitely. It's a hospital, you know, it's one of the biggest hospital in Gurgaon, the place where I live, and one of very nice facilities that you have in this hospital. Then operating profits are 100 crore and 132 crores. And अगर हम expenses की बात करें और हम year on year profits की बात करें, तो except 2019 and 20 when there was a dip, there has been quite good recovery in the year March 2022. फिर उसके बाद हम बोरोइंग्स की बात करते हैं, तो बोरोइंग्स है इनके पास, अच्छी खासी बोरोइंग्स है, और देयर इज कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, व्हिच इज अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट फॉर मी. उसके बाद डेटर डेज करीब 30 है और प्रोमोटर्स होल्डिंग करीब 33% है, व्हिच इज अ कंसर्न. प्रोमोटर होल्डिंग शुड बी अबाउट 50% और अबव. FII is about 6.76% है, DIS की होल्डिंग अबाउट 7.76% है, और पब्लिक की होल्डिंग बहुत ज्यादा है. But anyway, if I look into the price looks attractive at this point of time, and there could be a good buying that can be initiated in the stock. I have given you the trade plan, but please write out of these 5, which one would you prefer? The last stock, which is 5-star. Five-star, sorry, I have, which one I have taken? Five-star, here, 5-star bus finance, right? I think they are specialized into bus financing. So I'm again marking the first candle of the IPO day, and after that the stock has given a very beautiful breakout. Now the stock is coming down on the support again. See, यहाँ पे आ रहा है, ये एक सपोर्ट जोन है, मतलब 544 का एक सपोर्ट जोन है. अगर 544 को क्रॉस करता है, के ऊपर सपोर्ट लेता है, then I think we can initiate a buying above 605 for a target of 684. Above 684, I'm expecting it to move towards a target of 700, 800 and 900 within next 6 months to 1 year. अब इसके फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं कि फंडामेंटल्स कैसे लग रहे हैं इसके. 5-star business finance, not bus finance, I'm sorry. 5-star business finance. That was looking bus, so I thought it's a debt financing bus. No. So the companies are 17,000 worth crore, right? Quite a lot. Stock P is about 37, ROC is good 15, ROE is also 15. Company has reduced debt, and
कॉन में क्या है, कंपनीज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट बट नॉट पेइंग आउट डिविडेंड्स। कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज होल्डिंग, चोलामंडलम, मुथूट फाइनेंस एंड लाइक दैट। उसके बाद सेल्स की बात हम करते हैं, तो सेल्स जो है 2021 में 302 थे और अब 361 है। देयर इज स्लाइट ग्रोथ। और जहां तक हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा ग्रोथ है। सेल्स अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करेंगे तो बहुत ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट है। 2018 मतलब 4 साल पहले, 4 साल से अब तक इसमें अच्छा खासा एक 7-8% का जंप आया, राइट? नहीं, 6-7% का 7% का जंप डेफिनेटली आया सेल्स में, विच इज अ ह्यूज जंप। और जहां तक हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की, दे हैव आल्सो ग्रोन मैसिवली। और जहां तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करते हैं, तो आप प्लीज देखिए कितने जबरदस्त ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स है। 68, 73, 73, 77, 73%, ह्यूज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। दिस लुक्स नाइस। देन उसके बाद हम बात करते हैं ईपीएस की, तो ईपीएस इज आल्सो क्वाइट स्टेबल, 28, 65, 103 एंड 42। एंड मार्च 2022 में कुछ 15-16 रुपए का था। अब हम बात करते हैं इनके बोरोइंग्स की, तो बोरोइंग्स जो है रिजर्व से कम है, तो आई फील दिस इज कंफर्टेबल टू मी। और जहां तक हम बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो इनका भी वही है कि लोन एडवांसेस जो है 772 करोड़ दिए हुए। बट जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच वी नीड टू नोट, कि जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस है वो भी इनके नेगेटिव है, राइट? तो ये एक पॉइंट हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कि एक नेगेटिव लग रहा है मुझे थोड़ा सा। सो फार अगर हम कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी को अगर हम देखते हैं, तो proceeds from borrowings, this is positive, and proceeds from shares is positive, proceeds from borrowings is positive, repayment of borrowings ये नेगेटिव है। तो अगर हम देखें तो इनका मार्च में इनका नेट कैश फ्लो पॉजिटिव था, बट 2022 में नेट कैश फ्लो नेगेटिव है। It can be a negative thing, but please write in the comment box what do you think about the company, and the company's share pattern is not given over here. Okay. Overall, if I look into the points that attract me, is their operating profit margins, very strong operating profit margins, and the growth in the profits and growth in the sales. These are very important points. The points that I'm not liking are basically cash from operating activity. So there could be, because they have given loan advances, the major chunk goes into the giving advances, right? That is fine. That will reflect as negative, but there should be some profit from operations, like, so there is negative profit from the operations, so that is kind of a concern. So that is one of my biggest concern. But otherwise, if I look into the 5-star, it looks very promising at this point of time, right? It has given a very beautiful breakout, and after the breakout it is retracing and coming to a support zone, which is 540. If it takes a support, it stays here for some time and goes horizontal and then breaks in the upward direction, I will consider buying. Okay, so these are the 5 stocks. Let me quickly run through 5-star. My first stock was Fusion Microfinance. This was my first stock. Second stock was 𝐼𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀 Technology, right? This is the one that I discussed with you. These are all recent IPOs, right? You probably have not heard about them. Please research the companies and keep them in your list. This is the third one, which is email or Electronics Mart. Then the fourth one is Medanta. Fourth one is Medanta or Global Healthcare, which is again a very nice IPO that has been launched. And the last one is 5-star Business, right? This is the 5th stock. Keep them on your radar. They may give you some good move. I have given a similar stock to you recently, which was Prudent. Prudent was an IPO stock, Prudent Corporation, which I had given to you
at this place. Like when this first candle was born, somewhere here when it started at the bottom, it started consolidating. That's when I have given a buy. 517. You can go and check the date in July, and it has made a high of 1021, almost like 100% return from our entry. So IPO stocks, sometime if you track them, can give you excellent return. अगर आपको बहुत बड़ी रिटर्न चाहिए, आप IPO स्टॉक्स को ट्रैक करिए और आप एक अपॉर्चुनिटी मिलने पे उनमें एंट्री लीजिए. तो ये 5 स्टॉक मेरे रडार पे थे. आप प्लीज जो मैंने आपको बोला है कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, किसके फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे हैं, किसका प्राइस एक्शन अच्छा लग रहा है, और उसको रडार पे रखिए. ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो बहुत सारे और जो लोग कमेंट पढ़ेंगे उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा. So with this, I'll be signing off, and do join me for live trading every single day from 10 to 11, and we go live on the YouTube. So you can join me live on the YouTube, and you can also join through the go-to webinar link, which is given in the description box. So with this, I'll be signing off, and take care, and see you tomorrow in the live market. Bye-bye. Take care. All the best.